Good morning, children, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. How many of you have joined? Only 12 people have joined. So, today's topic is children. Yes, good morning. Sources of energy. Body 10 times. Please join faster. All of you, please come on time. Be quick. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning. Now, good morning to all of you, children. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, children, today we will start a new lesson, that is sources of energy.
sources of energy हम लोग start करेंगे आज. So please all of you, in this chapter sources of energy, as this chapter's name is sources of energy, so we will see that how we are attaining, with what are the sources by which we attain एनर्जी गेन करने का या एनर्जी अटेन करने का क्या क्या सोर्स है हमारे सराउंडिंग में. वी विल स्टडी अबाउट दोस सोर्सेस इन दिस चैप्टर. अभी क्लास चल रहा है, अभी नहीं देखूंगा. First of all, let us see what are the energy sources. For that, we will do one classification, how in which category we can keep these energy sources. So what are the categories? They are 3 categories according to the occurrence के हिसाब से कौन सा energy source है, physical state के हिसाब से कौन सा energy source है, and according to availability. For that, if we talk about energy sources, before that we will have to discuss one word, that is, please all of you mute your mic. Mic mute करिए. आर्यन कुमार आदित्य. आर्यन कुमार आदित्य, please mute your mic. Okay, we are talking about this chapter sources of energy. हम लोग sources of energy chapter 6 की बात कर रहे हैं. In that I was telling you that we should discuss about the term fuel. Now, what is this fuel? Fuel are those substances which can produce heat on burning, and they are called as fuel. These fuels are utilized to in different forms, in different terms, in different contexts, that they are just a source to generate energy. So what are the different types or classification on which we can divide the sources of energy? We can divide it into three categories. And what are they? They are according to occurrence, they are according to the physical state, and they are according to the availability. Availability means how they are present. किस तरह से वो present. So let us talk about this this one by one according to occurrence. First of all, natural sources. Natural sources are the sources which are present in nature. So what are the natural sources? What will be the example of natural sources of energy? That will be your wind, solar energy, then energy which is obtained by water. These are present in nature. We don't have to prepare it. We don't have to just spend something to generate it. We don't have to spend money and all to generate it, but we are getting it free of cost from the nature. That is solar energy, wind energy, and water energy, or you can call it as hydro energy. Then comes your synthetic source. If you are talking about synthetic source, then that will be man-made source. Synthetic source, which is a artificial source of energy generated by man to perform their activities. And these sources are your chemical energy, which is stored in batteries, and calculators, watches, and the other like electrical energy. Electrical energy को भी हम लोग synthetic energy बोल सकते हैं, because we are generating it. हम लोग उसको बना रहे हैं. Then after that comes your physical state of that particular form of sources of energy.
They are in three categories: solid, liquid, and gaseous state. So solids are your firewood, charcoal, coal are a very good example of solid fuels. Then what about liquid? Liquid is kerosene, petrol, diesel are your liquid forms of energy or fuels. Then gaseous, in gaseous we will talk about petroleum, that is LPG, CNG, which is in which some are very clean fuel and it is utilized in different purposes. Then according to availability, means how they are present on the surface of the earth. They are present in two forms: renewable sources and non-renewable sources. Renewable sources can also be caused as exhaustible, inexhaustible resources, and non-renewable can be called as exhaustible resources. So renewal means what? What do you understand by renewal? Which we can regain, जो थोड़े देर के बाद बन सकता है. लेकिन non-renewal are those sources which we cannot regain. हम लोग फिर से उसको बना नहीं सकते. Okay, so that type of energy is known as non-renewable sources of. Then here we will talk about again a term that is known as fossil fuel. एक term हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है fossil fuel. Now children, what are fossils? Fossil किसको बोलते हैं? Dead remains of plants and animals. The fuel which is obtained by the remains of plants and animals that get buried inside the surface of the earth for a very, very long period. और ये इसका example क्या है? आपका your petroleum product. Petroleum coal, ये सब क्या है? हाँ. So ये सब due to heat, pressure and temperature of the earth crust, they get converted into its usable form, we will say here, क्योंकि अभी हम लोग उसको use कर रहे हैं in the form of energy source. And this is a limited one because it takes a long period of time. बहुत ज़्यादा ही समय लेता है इसको बनाने में, और that is millions and millions of years. बहुत ज़्यादा साल. So these sources are very limited, but they are prepared by the dead remains of plants and animals which are buried inside the deep crust, earth crust, by the action of heat and pressure. Pressure difference. Then again a topic is there, wood as a fuel. Wood को हम लोग fuel कैसे मान सकते हैं? तो wood is a major renewable natural resource. Wood is a very, you can say, acting as a fuel for a large population of the country because it is easily available. Then it is free of cost. Then people can get it in the nearby. So they are utilizing this wood as a source of energy. But what are the harmful impact of using wood as a fuel? Fuel की तरह wood को use करने में harmful impact क्या है? Because it generates lots of smoke, pollutants. Yes. Smoke. Because it generates a lots of pollutants in the environment, and it can hamper our eyes, our lungs. So, and it is not good for our health, and it is not good for the environment. Clear? So now children, what are the gaseous products which are emitted by burning of wood? The gaseous product obtained are your carbon dioxide, carbon monoxide, and they are irritating and very, very dangerous to our health. Now till here any problem? कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, ma'am.
Okay. मैम वुड एज अ फ्यूल फिर से रिपीट कर दीजिए ना. वुड इज अ मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. वुड तो हम लोग का इजीली अवेलेबल होता है ना, नियर बाय फॉरेस्ट है, फील्ड है, देयर द वुड इज अवेलेबल एंड पीपल गो एंड कट द ट्रीज एंड प्लांट एंड दे कैन यूटिलाइज इट एज अ फ्यूल, मतलब ईंधन के रूप में उसको यूज करते हैं. यू सी द विलेज पीपल आर कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ दिस वुड. वुड से ही वो लोग लकड़ी से खाना बनाते हैं. But now the situation has changed slowly and gradually, but still they are depending on wood. Why? Because they don't have to pay for it. उसके लिए उसको कोई खर्च नहीं करना पड़ता है, इसलिए वो लोग wood को use करते हैं. That is why they are using this wood as a fuel. Now, what are the harmful impact? Harmful impact that it is polluting the environment. Environment को pollute करते हैं. Then करता है ये wood. Or it liberates this toxic gases, harmful gases like carbon dioxide and carbon monoxide, which is very irritating in our eyes, and it also causes these gases can cause lungs disease and respiratory problem. Okay, one of you please read the topic. मैम वुड को रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों कहा गया है, जबकि अगर उसको एक बार जलाएंगे तब तो वो खत्म हो जाएगा. फिर हम लोग और उसके पेड़ बाद बना उसका उगा पेड़ उगा नहीं सकते हो. उगा सकते हो या नहीं? उसको 1000 years लगेगा उगने में. नो मैम. तो रिन्यूएबल हुआ कि नहीं हुआ? शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम वुड को ले सकते हैं ना, अटेंड कर सकते हैं ना. इट डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम. 5-6 साल में फिर से एक बड़ा पेड़ हो जाता है. तो उसको हम लोग या 2-3 years में शॉर्ट प्लांट्स आल्सो कैन ग्रो. 1 year में सीजनल प्लांट कैन आल्सो ग्रो. तो ऐसा थोड़ी जरूरी है कि केवल बड़े पौधों को ही हम लोग लेते हैं और जलाते हैं. जो अनवांटेड प्लांट्स आल्सो रहते हैं, या फिर जो रोड साइड में प्लांट रहते हैं, जिसका जो यूटिलिटी इन द सेंस ऑफ द विलेज पीपल, यूटिलिटी तो पौधों का हमेशा रहेगा. ऐसा नहीं है कि कोई पौधा को आप काट कर जला दीजिएगा तो दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज. जो वेस्ट होता है, जो फील्ड से निकलता है, लाइक द लेफ्ट ओवर पार्ट्स ऑफ द क्रॉप्स, दैट कैन बी बर्न. लेकिन बर्न इन द सेंस कि अगर उसका फ्यूल में यूज हो रहा है तो दैट कैन बी कॉल्ड एज कि हम लोग यूटिलाइज किए उसके पार्ट को. लेकिन अगर उसको हम लोग जला रहे हैं तो दैट इज इन नॉट नन ऑफ द सेंस दैट इट इज यूजफुल फॉर द एनवायरमेंट और फॉर आवर हेल्थ. वो हमारे हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए यूजफुल नहीं है. क्लियर? सो एक मिनट, इसको हम लोग रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे. मैम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो मैम कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं साइंस में? साइंस में कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे, जिसमें एक ऑक्सीजन रहेगा. जिसमें 2 ऑक्सीजन रहेगा तो डाइऑक्साइड कहेंगे, और अगर एक ऑक्सीजन है तो उसको मोनोऑक्साइड कहेंगे. और कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. मैम कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं. मैम कार्बन मोनोऑक्साइड CO ओनली CO. डाइऑक्साइड का मतलब 2 हुआ. केमिकल फॉर्मूला पढ़े थे ना क्लास 7th में? Yes, ma'am. डाई का मतलब 2 हुआ. और अगर 1 है, मोनो है, मोनो मीन्स 1 और डाई मीन्स 2. तो ऑक्सीजन अगर 2 है तो डाइऑक्साइड कहेंगे CO2, and if it is 1 then it is CO. Clear? Yes. चलिए, one you please start reading from the first. Chapter 6 Read. Sources of Chapter Energy. We already know that
energy is the capacitance about different form of energy: energy, mechanical heat, chemical, electrical, light, sound, nuclear, and so on. These are interconvertible energy, however, cannot be created or destroyed. We need energy for all our activities, from baking chapatis or cooking cookies to sending astronaut into space. All form of energy that we use every day are stored in different ways in various sources of energy. We already know that the substance which produce heat on burning in air are called fuels. Classification of sources of energy. We classify the source of energy on the basis of Wait, karo. Here we will talk about, first of all, the conversion of energy. This you already know that it is energy is neither created nor destroyed. हम लोग energy का अलग अलग forms पढ़ चुके हैं class 6 7 में. तो वो क्या क्या था? Mechanical energy, chemical energy, electrical. These are the examples. Sound energy, nuclear energy, and so on. ये हम लोग पढ़े हैं और इसका यही हम लोग कंक्लूजन ये निकाल पाते हैं कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता. इट इज जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो that is interconvertible. Interconvertible means it can be changed from one form to the other. Then here the energies are used for different activities like baking chapatis or cookies or to sending astronauts to space. Then all forms of energy which are required in our everyday life, they are stored in various form in the form of sources of energy. And those things which give us energy, जो हमको energy देता है by producing heat or by burning, that is known as fuel. Now, what is the energy for our what is the fuel for our body? अगर fuel की बात करें तो हमको भी तो energy चाहिए, हमारे body को energy चाहिए. Food, especially containing carbohydrate. Not only carbohydrate. एनर्जी के लिए सारा न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, तो हम लोग फूड बोलेंगे. हियर वी विल कॉल इट एज फूड. वी विल नॉट कैटेगराइज इट कि कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट, विटामिन, ऐसा नहीं है. अगर आप फ्यूल की बात करें देन वी विल टॉक दैट all the forms of food, whatever we take, that provide us energy. So fuel for our body is your food. Then continue. Classification of sources of energy. We classify the sources of energy on the basis of occurrence. First, natural resources. Natural energy sources are those which are made available to us by nature. Solar energy, wind energy, energy from water, hydro energy are some of such natural sources of energy. Second, synthetic sources. Synthetic energy sources are those that use man-made material as source of energy. For example, chemical energy stored in the batteries used in calculator, watches, etc. is a synthetic source of energy. Physical state. Solid. Firewood, charcoal, coal are example of solid fuel. Liquid. Kerosene, petrol and diesel are all liquid fuels. Gas. Petroleum gas, commonly used as LPG, and natural gas are also used as CNG, are example of gaseous fuel. Availability. First, renewable. A renewable source of energy is a natural resource that can replenish itself naturally over a short period of time. Wind, sun, biomass, and hydropower are all renewable sources of energy. These are inexhaustible natural resources. Non-renewable energy sources which get used up and cannot be replaced or replenished in a short period of time are called non-renewable sources of energy. These are also called exhaustible natural resources. Fossil fuel like petroleum, natural gas, and coal are non-renewable sources of energy. Do you know a reasonable
good estimate of the quality of a fuel can be attained through what is known as its calorific value. The calorific value of a fuel is the amount of the heat obtained from it. When a unit mass of this fuel is completely burnt out under ideal condition, for example, the calorific value of coal is 30,000 kg by kg, and that of wood is 20,000 kg by kg by kg. The above value indicate that coal is a better fuel than wood, fossil Now, fuel. wait a minute. Whoever you are reading, जो भी आप read कर रहे हो, tell your name. What is your name? Ma'am Aditya Raj. आदित्य राज. रीडिंग में थोड़ा कभी जहाँ पर फुल स्टॉप आए वहां पर रुकना चाहिए बेटा. दैट इज अ रीडिंग फ्लो में नहीं रीड करना चाहिए. ठीक है. You are reading, but when you are breaking it, you stop in the on the full stop. Now, ये यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि there are the classified energy is according to the basis of the occurrence, then physical state and availability. Now you can see that all these three categories represent that which type of energy fuel or energy forms or energy sources are there. Like if we talk about, and you just don't get confused that ma'am इसका example तो इस category में भी हुआ है, तो वो होगा आपको. जैसे कि अगर हम renewable source बात कर रहे हैं तो उसका example जो होगा वो आपका natural source की में के example में भी होगा, क्योंकि both are in different categories. We are dividing it into different categories, but they are taken from the surrounding itself. हमारे surrounding से ही लिया जा रहा है. तो पहला क्या है, अगर हम natural source की बात करें तो sun, wind, hydro electricity, those are what easily available in the nature. अगर जो चीज easily available होगा और एक टाइम पीरियड के बाद वो फिर रीगेन किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल सोर्सेस भी बोल सकते हैं, और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज इनएग्जॉस्टिबल. सो सन, विंड, वाटर, that will be your natural source also, and that will be your inexhaustible or renewable source also. Is it clear? ये बात आपको क्लियर हुई? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये नेचुरल सोर्स का अगर एग्जांपल है तो हमारा रिन्यूअल का एग्जांपल कैसे हो सकता है? बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर इन दिस बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर आल्सो दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. वो अपना फॉर्म केवल बदल देता है. तो फॉर्म अगर बदल लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह का जो सोर्स है वो दूसरे तरह के एग्जाम्पल में भी यूटिलाइज किया जा सकता है. देन मैन मेड सोर्सेस. अगर हम मैन मेड सोर्सेस की बात करें तो मैन मेड सोर्सेस में आपका वैसे आपका नेचुरल रिसोर्स, नेचर में तो आपका पेट्रोल भी आ जाता है, लेकिन उसको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं? नेचर में ही बनता है ना कोल एंड पेट्रोल, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट. हम लोग उसको जाकर बनाते नहीं ना है कोल को. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन Yes. हम लोग ये इनएग्जॉस्टेबल या रिन्यूअल सोर्स में नहीं रख सकते. क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या है, रीगेन करने का बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, एंड दैट इज नोन एज फॉसिल. उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं. हाउ द फॉसिल्स आर फॉर्म बाय द pressure, difference in pressure and temperature. Then there is leftover part of plant, animals, they just get buried inside the soil and they remain over there for a longer period of time, then that gets converted into this coal and petrol. Then we were talking about synthetic sources. इसमें हम लोग बोले कि man-made sources are synthetic sources. Then that can be an example of your non-renewable sources also. वो non-renewable source के केस में नहीं, इसमें आपको fossil fuel के केस में होगा,
जो फॉसिल फ्यूल के कैटेगरी में आप लिए हो वो आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स में आएगा। देन मैन मेड कैटेगरी में आपका जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट का फ्यूल का या सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हो, तो दे कैन बी योर एग्जांपल फ्रॉम मैन मेड सोर्सेज। नाउ सॉलिड में फायरवुड, चारकोल, कोल, these are solid. Liquid, kerosene, petrol. These liquid fuels which are present in your the examples of physical state, ये आपका फॉसिल फ्यूल से भी लिया जा सकता है, क्योंकि आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, these kerosene और पेट्रोल और डीजल, they are petroleum product. So this also are non-renewable, but as they are in liquid state, we are categorizing it into a different category, and that is known as liquid fuel or liquid energy source in the form of liquid. Then we will talk about gaseous fuel. Gaseous fuel की बात करेंगे तो again petroleum products which are your fossil fuel that can be kept in this category. The non-renewable sources may always they are your petroleum product. Petroleum product are always taken as non-renewable sources. Then here in do you know a word is added over there, calorific value. Calorific value का मतलब क्या हुआ? What is calorific value? Anybody? Calorific value of a fuel Ma'am, is the amount of heat obtained from it. amount of heat Yeah. obtained by burning. कैलोरिफिक वैल्यू का मतलब हुआ कि हीट को हम कैसे मेजर कर पाएंगे, हाउ वी विल मेजर हीट. वी कैन मेजर हीट विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट, और ये यूनिट आपको कैलोरिफिक वैल्यू के सेंस में आएगा, जिसको हम मेजर करते हैं किलो जूल पर केजी. और कैलोरिफिक वैल्यू का सेंस हुआ कि किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी से जो हीट जनरेट हो रहा है उसका अमाउंट कितना है. जितना ज्यादा उसका कैलोरिफिक वैल्यू होगा उतना ज्यादा उसमें से हीट जनरेट. लाइक हियर देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ कोल एंड वुड. कोल और वुड का कंपैरिजन दिया हुआ है कि 30,000 किलो जूल पर केजी, मतलब 1 केजी में 30,000 किलो जूल ऑफ heat is generated by coal, by burning of coal. And when we burn wood को अगर burn करते हैं, then we are getting 20,000 kilojoule per kg of heat. So that generation of heat, which is more in case of coal as compared to wood, that can be measured with the help of this unit, and we can define it, or we can say that the calorific value of coal is much higher than calorific value of wood. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आप सोर्स ऑफ एनर्जी अगर सेलेक्ट कर रहे हो किसी काम के लिए, तो जो काम आपको फास्टली करना है उसमें आप ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू वाला सब्सटेंस लोगे ना, सोर्स ऑफ एनर्जी लोगे. लाइक सपोज कर लो एलपीजी गैस आजकल हम लोग क्यों यूज करते हैं कुकिंग में? देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ना, है कि नहीं? Yes, ma'am. अगर 1 किलो गैस अगर आप बर्न करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा एज कंपेयर टू कोल और वुड, और वो कन्वीनियंट भी है. इट इज फ्री फ्रॉम स्मोक ऑल्सो, इट इज नो एशेस आर देयर, एंड इट इज कन्वीनियंट. आप जब मन उसको जला सकते हो, और इसमें ये प्रोविजन नहीं है. दिस इज नॉट देयर इन कोल एंड वुड और कोल में ये फैसिलिटीज नहीं है कि आप जब मर्जी तब उसको विथ स्लाइट स्पार्क यू कैन इग्नाइट. देन रीड फॉसिल फ्यूल. Fossil fuel. As at present, most of our energy need are met through non-renewable energy sources, mainly fossil fuel like petroleum, natural gas, and coal.
Fossil fuel are so called because they were formed over a period of millions of years ago by the action of heat from the earth core and pressure from rocks and soil on the remains of dead plant and animal. Let us study about them in some detail. Wood as a fuel. Wood is a major renewable natural resource. The combustion of wood is currently the largest source of energy. Wood can be used for cooking and heating. It may occasionally be used in steam engine and steam turbines that generate electricity. Combustion of wood produce heat which can be put to a variety of uses. However, it also produces other gases like carbon dioxide and carbon monoxide, which are undesirable, irritating, and dangerous. Do you know the excessive removal of wood from the forest can cause habitat destruction and soil erosion? Its combustion releases more carbon dioxide than its biodegradation. Okay, so fossil fuels are generated or produced by the just burning of the plants, remains of dead plants and animals for thousands and millions of years due to the action of heat and temperature and pressure. And this wood, as we were talking about it as a fuel, they are it can also damage the environment or habitat if we are overusing or overcutting the wood of a particular area for our fuel. क्योंकि fuel के लिए हमें हर दिन लकड़ी की जरूरत होगी. So if we are using it in a regular fashion or a regular manner, then we are destructing the environment also. We are destroying the habitat of certain animals also. That can lead to soil erosion also. So these are the impact which it will give to the environment, and its combustion will release more carbon dioxide than its biodegradation. Biodegradation means if you are burning or if you are making the plant to rotten, that will also, after decomposition, it will generate some gas, but that level of gas generation will be quite different or less as compared to burning of that. Is it Ma'am, clear? what is steam turbine? Ma'am, what is steam turbines? Steam turbines are turbines that are used to generate electricity. या आपको अलग अलग काम में यूज होता है, कोल जनरेशन में भी होता है. From where have you taken that word? Food as a fuel. Wood as a fuel. वही बोले ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है. बड़ा बड़ा चेम्बर्स होता है जो स्टीम पर बेस्ड होता है, जिसमें कि वुड को जलाया जाता है और उसका वेपर से वर्क किया जाता है, वाटर को हीट किया जाता है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस तरह का काम किया जाता है ताकि वो वर्क किया, क्योंकि ये हेवी मशीन्स को रन करता है. दैट इज नोन एज स्टीम इंजन्स और टर्बाइन्स जो स्टीम से वर्क होता है. दैट वर्क्स ऑन स्टीम. स्टीम समझते हो ना, वेपर फॉर्म. तो वेपर फॉर्म को, वेपर को पहले पानी को हीट करोगे तब ना वेपर में बदलेगा. So steam engines are used in this type of work to generate electricity for heavy work. बहुत ज्यादा ही heavy work के लिए कहीं कहीं electricity का generation के लिए इसको as in the form of just heat it is used. Till here it is clear, the topic is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Definitions, जितना भी definition इसमें है with example and in which category they are, कौन से category में कौन fall करता है उसके हिसाब से आप इसको read कर लीजिएगा. Okay, thank you. This much is for today. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, Thanks, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. हाँ, thank you. Anybody किसी Thank और you, कोई ma'am. confusion है, then you can ask. कुछ अगर है आपके पास material